Students, hope all you are fine and having good health. It comes in my knowledge that all you are facing difficulties in science type reading and translation too. So for the sake of listeners, I just made this video. Today we are going to discuss the chapter number 1 of 8 class, Tolerance of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ki buddbari. First of all, we are going to discuss the paragraph number 1. Tolerance means to bear pain or hardship with patience. We read the paragraph throughout and also with the line-wise translation. So we start. Tolerance means to bear pain or hardship with patience. Tolerance means buddbari. Bear बर्दाश्त करना, hardship मसाइब. Tolerance means to bear pain or hardships with patience. बुर्दबारी का मतलब है दुख या मसाइब को सब्र के साथ बर्दाश्त करना. It also comes to bear things you do not like. इसका मतलब ऐसी चीज़ों को भी बर्दाश्त करना है जिन्हें आप बिल्कुल नापसंद करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन यू आर इन अ पोजीशन टू टेक रिवेंज, जब आप मिसाल के तौर पर जब आप इंतकाम के लेने की इस्तात रखते हों, मगर ऐसा रखते हों बट यू आर डिस्प्लेइंग टॉलरेंस, लेकिन आप बुर्दबारी का मुजाहिरा करते हैं. मिसाल के तौर पर आप इंतकाम लेने की इस्तात रखते हों लेकिन आप इंतकाम ना लें, तो इसका मतलब है आप क्या कर रहे होते हैं, आप बुर्दबारी का मुजाहिरा कर रहे होते हैं. दैट इज़ अ गुड. द ग्रेटेस्ट टॉलरेंस वाज प्रैक्टिस बाय आवर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीम तरीन बुर्दबारी का मुजाहिरा किया. टॉलरेंस आपको मैं बता चुकी हूँ, जिसका मतलब होता है बुर्दबारी. प्रैक्टिस मीन्स अमल करना और बियर इज़ द बर्दाश्त करना एंड डिस्प्ले मुजाहिरा करना. डन. ओके, नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स द सेकेंड पैराग्राफ. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ मॉडल ऑफ द टॉलरेंस. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्दबारी का एक नमूना है. ही नेवर विश्ड इल फॉर एवरीवन. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी का बुरा ना चाहा. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सेड दैट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टुक रिवेंज अपॉन एनीवन. आप रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से इंतकाम ना. अबू सुफियान वाज द वर्स्ट एनिमी ऑफ द इस्लाम बिफोर ही बिकेम अ मुस्लिम. अबू सुफियान मुसलमान होने से पहले इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था. द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट ऑल्सो ऑनर्ड हिम बाय द डिक्लेयरिंग एमनेस्टी फॉर दोज हु टुक रिवेंज इन दिस हाउस. फतह मक्का के मौके पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ इसे माफ़ कर दिया बल्कि इन लोगों के लिए आम माफ़ी का ऐलान करके इनकी इज़्ज़त अफजाई भी की जिन्होंने इनके घर में पनाह ली. Next we move towards the third paragraph. When Rasul sallallahu alaihi wasallam went to the Taif to preach Islam. जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के लिए ताइफ तशरीफ़ ले गए, the people there threw stones at him. तो वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारे. हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम asked O Rasul sallallahu alaihi wasallam on the occasion of the trial, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, speak if you so wish. इस आजमाइश के मौके पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए, इफ़ यू सो विश आई विल डिस्ट्रॉय देम. अगर आप चाहते हैं तो मैं इन्हें तबाह कर दूँगा. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम replied, O gracious and the merciful Allah, show them the right path, for they do not know what they are doing. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ए अल्लाह रहीम व करीम, उन्हें सिरात मुस्तकीम दिखा दे, for they do not सिरात मुस्तकीम दिखा दे क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं. They do not know I मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नहीं जानते हैं कि मैं रसूल अल्लाह हूँ. Make it known to them that I am their great well-wisher. इनमें ये शऊर पैदा फरमा दें कि वो समझ सके कि इनका
کہ میں ان کا نہایت خیر خواہ ہوں. We should follow the teachings of رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرنی چاہیے. We learn from his life how much tolerance he practiced. ہمیں اب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر بردباری کا عملی طور پر مظاہرہ فرمایا. The رسول صلی اللہ علیہ وسلم showed great tolerance throughout his life. محمد صلی اللہ علیہ وسلم even prayed for his enemies and for those who trouble him. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں اعلیٰ بردباری کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تھی. In his last address, Rasul صلی اللہ علیہ وسلم said, "Revenge for bloodshed, as was the custom in the days of the ignorance before Islam, is forbidden." آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا، خون ریزی کا انتقام جیسا کہ اسلام سے پہلے جہالت کے زمانے میں رواج تھا، ممنوع قرار دیا جاتا ہے. I forgive those who murdered my cousin ابن ربی. حضرت انس بن مالک said, I served the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم of Allah for 10 days. By he never objected to anything I said or did. میں ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں جنہوں نے میرے چچا زاد ابن ربی کو قتل کیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے 10 سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. اللہ کی قسم، by اللہ کی قسم، he never objected to anything I said or did. اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میری کہی ہوئی کسی بات یا کیے ہوئے کسی کام پر اعتراض نہ کیا. نیکسٹ اور لاسٹ پیراگراف نمبر 5. We as Muslims should follow the noble examples of the tolerance of our Rasul صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غور و فکر گفو گزر کی عظیم و شان مثال کی پیروی کرنی چاہیے. The deterioration and the conflict prevailing in the society is due to the lack of the tolerance. بکار اور لڑائی جھگڑے جو معاشرے میں عام ہوئے ہیں وہ درگزر کی کمی کی وجہ سے ہیں. This means can only be cured by following the noble examples set by our beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس خطرناک رجحان پر صرف اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ عظیم الشان مثالوں کی پیروی کرتے ہوئے اس پر قابو پا سکتے ہیں. Now students, our chapter number 1 is going to be completed with full-fledged reading and with the dance session, so hope so it becomes easy for you. Thank you.